जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 544th episode of live analysis. So today, what a bumper day for the equity markets. Nifty, Banknifty rallied almost towards the end of the weekly targets that we discussed yesterday, and what a phenomenal rally in the HDFC Bank stocks. So, how does the market look from here, and what are we supposed to do? We will discuss all these things in today's session, and welcome all of you. And just to give you an idea, that the next training is scheduled on April 16th and 17th. So, any of you, if you are interested to join to learn from us, you can WhatsApp. Number is given in the description box, and you can register for this training. Once you register, you will be added in our exclusive student Telegram group for a period of 3 months. And before starting the session, do like, share, subscribe to our YouTube channel. And also, you can follow us on Facebook and Instagram. The links are given in the description box. All right, so let us start today's session. Welcome, welcome. All right. So right now, the equity markets, global markets are on the green side. We can see the European markets trading slightly on the positive. US market is also up by almost a 0.5%, but nothing as comparable as our Nifty. Okay, so indices are trading positive, so the undertone is positive. But as I discussed yesterday, US market looks some sort of fatigue will set in, and this is a short setup, so we can sell on rise for some more downside here. And positionally, we will still hold that same view that the S&P 500 has a major resistance near 4650, 4680, and from these levels we expect the markets to come down significantly. So that is the view, and we will stick with this view. Yeah. Now let us talk about the forex market, because here something interesting happened. So today, US dollar is trading flattish. इसमें कुछ खास change नहीं है, and we will go with the same view that we have these as a support, and on the higher side we have these as a resistance. I don't see US dollar moving on either side in a very big manner. I believe US dollar will trade in this zone for next few weeks. Now, having said that, today very interesting thing happened, and as all of you know, that HDFC Bank, they declared the merger of the companies, of both the companies, HDFC Limited and HDFC Bank, and the news came as a very big surprise, and the market wasn't, to be honest, market wasn't looking towards this news. And maybe the insiders, they must have, obviously accumulated these shares, and they must have taken position in last few weeks and few days. Now, from a forex perspective, what happened is the USD INR pair, it opened gap up today, and it opened somewhere near 76.15, which was a very good opening in my opinion. So the opening on USD INR was very good, and just after 3-4 minutes, the news from HDFC came, and because of that, this very good opening became very bad, because the positive news from the SDFC that created a bearish movement towards this, and it started to fall till 75.75. So this has triggered some sort of negative move in the USD INR pair. Now tomorrow and day after tomorrow, these 2 days will be very crucial days for all markets, with respect to India. So these 2 days are going to be very crucial for the forex market in India, as well as for the NSC market in India. Now, I will discuss Nifty, Bank Nifty, and stocks at a great length. But first, let us complete this forex analysis. So, right now, the USD INR pair is unfortunately little more bearish, and I think we should allow it some more time to make a base near 75.5, etc. So, if this down move continues, the USD INR can go very easily till 75.25 on the spot. So roughly translates to 75.45 or 75.5 on the futures, right? So this is where the USD INR pair is headed. Now, with all this rally in the equity markets and Nifty crossing the 18,100 mark, if somehow the USD INR pair, whether in spot or future,
makes a base at 75.25 in this slab, then it can start next leg of rally on the higher side, which can take it forward towards 77.50. And in the immediate short term, we can see very easily 76 and a half, very very easily, right? So there is a good scope for a 100 bips move on the USD INR pair from this 75.25 to 76 and a half लेवल. तो ये एक अच्छा ट्रेड होगा, मैं समझता हूँ ये एक बढ़िया ट्रेड होगा यूएसडी आईएनआर पे. आज की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली the HDFC news spoiled. Now, second जो pair है that came under pressure because of the fall in USD INR is again GBP INR. So GBP INR में भी एक अच्छी ओपनिंग होने के बावजूद भी ये ट्रेड जो है काफ़ी माइनस में यहाँ पे चला जा चुका है. बट स्टिल आई फील tomorrow we can see, tomorrow I think we have very good levels, 99 and 99.5. I don't think these are going to break very easily. So these are very good slabs. You can accumulate GBP INR here, and on the higher side we still expect that very soon we will see 101.50. Third pair which came under pressure was Euro INR. So Euro INR is definitely under pressure because Euro USD is down today by 0.5%. So I think Euro जो है और slide करेगा maybe towards 83, but I think 83.25, 83, these are very good levels. And the fourth pair which was obviously to come under pressure because of the rally in the USD JPY, that was JPY INR. So this has again tanked little more, but still 61.5, it's a rock solid level. So all these are great levels to buy these forex pairs. Try to accumulate in small pieces, don't go over the board, and just wait for some time. You will see profits in all these pairs. So that's the overall update in the forex market. Now let us have a look at the commodities markets, जहाँ पे ट्रिमेंडस, बहुत ही शानदार, मैं समझता हूँ कि ट्रेड्स चल रहे हैं, स्पेशली जो ग्रुप मेंबर्स हैं. डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इसमें मज़ा आ रहा होगा, स्पेशली क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में. एंड टुडे अगेन many people have made 200 points, some have made almost 400 points, some have made 300 points. So the trade was very simple, and in the morning session हमने इसमें एक long trade दिया. If I open the 5 minute chart, लॉन्ग ट्रेड कहाँ पे मैंने दिया? लॉन्ग ट्रेड मैंने दिया था 75.30 के आसपास. दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ओवर हियर, 75.20, 75.30, and this is where I gave the trade with a stop loss of 73.75 below this black line, below this line over here. And we got a very obvious, you see the morning lows, the Asian lows are flushed. In the European session, it could not sustain. There is a flag pattern which gives a breakout, and boom, 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 it went all the way till 7800. So ये एक बहुत ही huge और एक बड़ा ट्रेड था, and I think all of them have taken this trade. Again, I have given one more trade which is buy near 76.25, buy near 75.80. ये पूरा बाइंग जोन है. कोई भी यहाँ पे गिरावट आती है तो इसे आप बाय करिए, और इसे आप कैरी भी कर सकते हैं, एंड इसे आप कैरी करके ओवरनाइट रख सकते हैं. स्टॉप लॉस हम 74 के नीचे मेंटेन करके चलेंगे, and tomorrow we can see 8000 levels on the crude oil. So this is one trade which we can take before closing also, right? And if I look at the daily chart, right now the daily chart, we have a bullish engulfing right now in the making. So if I make it candlestick, आपको ये दिखाई देगा. ये बहुत ही शानदार एक जो है एक रिवर्सल पैटर्न है from an expected level, right? Okay, so few people are saying that there is some audio issue. Just let me know, because everything is fine from my side. If there is any audio issue, I don't know why it is happening. अगर सबके साथ ये हो रहा है तो do let me know. Then it would mean that मेरे साइड से प्रॉब्लम है. अगर कुछ एक लोगों को हो रहा है, then it is something from your side. Okay, so this is basically the positional trade that I'm talking. You can buy on any dip. आप इसे जो है buy कर सकते हैं before closing, and try to keep stop loss at 7300, right? ये हमारा एक stop loss हो जाएगा दोस्तों. और ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है, if this is a reversal in the making, then we are looking at a very easily, we are looking at 8200 level and 8600 level. तो यानी round about we can see 8400 level on an average. So this can mean a very huge profit. This can mean a very huge move of almost uh, yeah. So it can be a big trade, right?
now. Okay, so some people are saying that it's all okay, some people are saying kuch issue hai, I don't know. Okay, I don't know why it is happening. uh, ओके, राइट, ओके, सो दैट्स ऑल ऑन द क्रूड ऑयल फ्रंट. रही बात नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस भी काफ़ी अच्छे से आज जो है कंसोलिडेशन कर रहा है. एटलीस्ट इट इज़ नॉट ब्रेकिंग डाउन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. नाउ नेचुरल गैस में आज इस समय कोई ट्रेड नहीं है, बट टुमारो there will be a trade. Tomorrow there will be a trade. It can come in either long or short. That will depend on how we open. Basically, the plan is very simple, that if there is a gap up opening, we would like to go on the long side. And if there is no gap up opening, or if there is a flip flop here, तो हम यहाँ पे एक short trade लेंगे for a target of roughly 410 and maybe 400. Okay, so अभी कोई ट्रेड नहीं है. टुमारो वी विल सी, based on the opening and how it moves in the early hours, we will get good trade in natural gas. लेट अस टॉक अबाउट कॉपर. सो कॉपर इस समय जो है 820 पे ट्रेड कर रहा है, और कॉपर में अभी भी कोई खास मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है. एज यू कैन सी, सिंस लास्ट सो मेनी डेज इट इज गोइंग नोवेयर, एंड इसको हम इसीलिए अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन द मेटल स्पेस. सिल्वर की बात करें, प्रेशियस मेटल में, तो सिल्वर में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मुझे 65,000 का लेवल दिखेगा तो ही मुझे कुछ इंटरेस्ट आएगा. तब तक सिल्वर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज सिल्वर इज बेरिश, और सिल्वर को जो है आप सेल ऑन राइज थोड़ा कर सकते हो, बट ऑन अ सिग्निफिकेंट राइज. सो यू कैन शॉर्ट सिल्वर नियर 67,000 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 68,000. टारगेट हो जाएगा 65,000. तो सिल्वर में इस समय जो है ये एक बेरिश ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, तो हम इसे नीचे की तरफ देख रहे हैं 65,000. और जब 65,000 आ जाएगा तो हम इसे जो है लॉन्ग करना पसंद करेंगे फॉर हाइयर टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 69,000 के आसपास. ठीक है, सो यहाँ पे एक शॉर्ट इस तरीके से, और उसके बाद एक लॉन्ग इस तरीके से, दो ये ट्रेड प्लानिंग में हैं. और गोल्ड की रही बात, तो गोल्ड 51,500 पे ट्रेड कर रहा है. गोल्ड पे भी इस समय कोई ट्रेड नहीं है. गोल्ड पे अगर हमें नीचे के लेवल्स मिलेंगे लाइक 50,500, तो ही हम इसे ट्रेड करना पसंद करेंगे. राइट नाउ gold MCX, what it is doing is it has made an inside bar and it is trying to break down. Now with this as a setup, it's a classic price action setup that we discuss in our the price action training. So if you are familiar with the concepts, you know what to do in tomorrow's session. तो आज ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो चुका है, आज एक ट्रेड सेट हो चुका है, बट इस ट्रेड को आपको कल एग्जीक्यूट करना चाहिए. और ये ट्रेड क्या होगा? इफ देर इज अ गैप डाउन ओपनिंग, सिंपली शॉर्ट एंड कीप अबाउट दिस कैंडल एज अ स्टॉप लॉस, और टारगेट हम रखेंगे इस लेवल को, जो कि होगा 50,800. ठीक है, ये ट्रेड नंबर एक है. अगर कल ये गैप अप करता है, आज के कैंडल के ऊपर अगर गैप अप करता है, तो उसे बाय करिए. आज के कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम थोड़ा छोड़ देंगे. टारगेट वी विल सी इट कैन वेरी इजिली गो टिल 52,800. ठीक है, इट विल गो 52,800. तो इस तरीके से जो है गोल्ड में दोनों साइड के ट्रेड्स हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, शॉर्ट साइड में भी एंड लॉन्ग साइड में भी. ठीक है, सो दैट इज द प्लान फॉर टुमारो. सो टुमारो you have trading plan on gold, and you have trading plan on silver. You also have trading plan on natural gas. क्रूड में अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मेटल्स में हम अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स द कंप्लीट अपडेट ऑन एंटायर MCX. Okay, now let us talk about Bitcoin and Ethereum. So Bitcoin is trading slightly down as of now, and Bitcoin, you can see it is down by almost 600 points. And the trade is very simple: buy on dip. If you get any dip towards 44,000, you can buy Bitcoin with a stop loss of 42,000, and next target will remain 52,000. So it's a big trade of almost 8,000 points on Bitcoin. सिमिलरली इथेरियम में भी वही चीज़ है जो कल हमने डिस्कस किया था. इथेरियम में भी हमें अगर कोई ड्रॉप मिलता है तो हमें इसे बाय करना चाहिए, एंड स्टॉप लॉस 2900 का होगा. टारगेट होगा 4,000 या 3950 के आसपास, समवेयर ओवर हियर. सो सेम अपडेट है, कोई चेंजेस नहीं है बिटकॉइन और इथेरियम में. ओके, नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट. सो what happened with Nifty and Banknifty? Let us see, and what is the plan for tomorrow's session. So
let me first open the price and time chart for Nifty. So if you remember, let me just repeat the entire story what has happened so far. So we started off by talking about this as a top in the month of October. Then we got a first decline towards 16,200 level, then a counterback rally towards 18,200. It did not sustain, and then we started for the short side, and the final target was a test of the 200 the 233 moving average, which came near 16,400. It broke below that, and we gave a target of 15,500 where the market bottom. We called this bottom, and we started the counterback rally towards the test of 18,100 level. Now जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, I think each and every person can vouch that whatever I have said, we have talked about this, we have discussed on daily basis with complete follow through on our YouTube channel, right? So अब ये जो चार लेग्स थे इस बाजार के, पहला ये लेग, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये अब लगभग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ओके, सो नाउ विद टुडेज न्यूज, व्हाट इज द रोड मैप अहेड? क्योंकि ये तो एक सरप्राइज हो गया सबके लिए, राइट? किसी को भी पता नहीं था, एंड देयर वाज नो रूमर और नथिंग लाइक दैट. So let us first understand the difference between buy the rumor, sell the news concept with respect to today's price action. यानी जो एक बाजार में कहावत है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज, यानी कि अगर कोई बाजार में कोई न्यूज ऑलरेडी चल रही है, जब वो न्यूज पब्लिश हो जाती है, ठीक है, सो द मार्केट रन्स leading up to that news. Once the news is published on TV or anywhere, then what happens is market undergoes profit booking. So buy the rumor, sell the news, ये इस तरीके से होता है. बट जब ऐसा कोई न्यूज जिसके बारे में मार्केट को कोई भी भनक ना हो, वैसी कोई न्यूज आ जाती है और वो भी बहुत बड़ी टाइप की न्यूज आ जाती है, then what happens is the market is caught on the wrong foot. Okay, so if you remember, in our training, we have discussed the three type of people, entities in the market, and we have discussed how the market is almost the killer. यानी मार्केट जो है ये हमेशा एक हंटर होता है और ट्रेडर्स जो है ये हंट होते हैं. बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन these markets are themselves hunted, करेक्ट? और ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा जब सिचुएशन होता है तो फिर मार्केट में क्या होता है. Okay, so today was one such day of a moderate magnitude, I would say, because it was respect to with a stock, not with respect to any other thing. But nevertheless, it produced a very large up move, right? So यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि बाय द रूमर सेल द न्यूज, क्योंकि इन्वेंट्री उस हिसाब से पोजिशन ही नहीं थी. यहाँ पे जो चीज हुई है वो ये हुआ है कि इन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही विकेड तरीके से मैं कहूँगा कि इन्होंने शॉर्टर्स को ट्रैप किया है. नाउ इमेजिन if you are going to merge two of the largest companies in India without giving any filler to the markets, then you are very crafty, I would say. बिकॉज इसमें ऐसा है, और ऊपर से मार्केट खुलने के सिर्फ 3 मिनट बाद ही आप जो है, या मार्केट जस्ट खुलने के पहले आप अनाउंस करते हो. सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी स्मार्ट मूव, एंड आई एम 100% श्योर कि अगर इसमें थोड़ी इंक्वायरी की जाए तो यू विल फाइंड टन्स ऑफ पीपल हु मस्ट हैव डन इनसाइडर ट्रेडिंग. एंड जो टॉप के हैं वहीं से शुरू किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पहले भी ये लोग कर चुके हैं ऐसा. ठीक है, सो दोज हु नो हाउ द कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्क्स ऑन नरिमन पॉइंट, you know how these guys they manipulate the markets. Nevertheless, अब मार्केट की बात करते हैं, इनके काले धंधे को छोड़ते हैं, मार्केट की बात करते हैं. सो नाउ व्हाट्स द पोजीशन? अभी देखो, रिसेंटली हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था दोस्तों, कि ये जो एक कंसोलिडेशन बन रहा है, राइट? मार्केट अगर 17,350 के ऊपर तोड़ता है तो मार्केट 18,100 के लिए पूरी तरीके से रेडी है. बट बात ये नहीं है कि 18,100 आएगा कि नहीं आएगा, बात ये है कि किस तरीके से वो आएगा. और मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट जो है मेल्टअप फेज में जाने वाला है. ठीक है, नाउ ये है सबसे बड़ी विशेषता हमारे एनालिसिस की. आपको रेयरली कोई मिलेगा जिसने ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताई होगी कि मार्केट जो है मेल्टअप फेज में जाएगा. बिकॉज इट डजंट मैटर वेयर द मार्केट इज गोइंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ द मार्केट इज गोइंग. बिकॉज ट्रेडर्स जो हैं
ये उस हाव के वजह से जो है पोजीशन बनाते हैं। आपको कल कोई बोल दे कि मार्केट 22,000 जाएगा, बट अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से जाएगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, राइट, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। से फॉर एग्जांपल इफ मार्केट डिसाइड्स टू मूव इन द फॉर्म ऑफ गैप, अगर हर दिन मार्केट गैप अप करता हुआ चला जाएगा, तो एक ऑब्वियस जो एक एवरेज ट्रेडर होता है वो 200-400 पॉइंट के बाद कैरी नहीं करेगा पोजीशन को, बिकॉज ही विल इनहेरेंटली फील दैट द मार्केट इज रनिंग ऑन गैप एंड we should fade the market. There is an inherent calling that comes in the traders, correct? But इसी के बदले अगर ये मार्केट एक zigzag फॉर्मेशन में जाए तो उसी ट्रेडर को एक कंफर्ट फील होता है, बिकॉज द मार्केट इज क्रिएटिंग स्ट्रक्चर सो ही कैन मैनेज हिज ट्रेड, करेक्ट? सो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर्स मोर देन वेयर द मार्केट इज गोइंग, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट किया था कि मार्केट एक मेल्टअप फेज के थ्रू जाएगा। नाउ सो वी हैव रीच्ड एट दिस लेवल। कल हमने डिस्कस किया कि मार्केट जो है, क्योंकि इतने ऑब्वियस लेवल पे सब लोग देख रहे हैं, तो मार्केट या तो ओवरशूट करेगा या तो मार्केट अंडरशूट करेगा। ओके, नाउ विद टुडेज मूव व्हाट हैज हैपेंड इज मार्केट वाजंट पोजीशन टू रीच दिस लेवल इन दिस फैशन। सो मार्केट नोज इन इट्स मेमोरी कि यहाँ पे मार्केट के साथ जो है एक धोखा हुआ है, ठीक है, और मार्केट जो है सबसे स्मार्ट आदमी है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस अपने धोखे का बदला जो है ना बहुत ही अलग तरीके से लेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैं ट्रेनिंग में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि सितंबर 2019 इफ यू रिमेंबर दिस कैंडल, right, this is the corporate tax cut candle. Now if you remember, market on the preceding day market wasn't ready for such a ballistic reversal, because there was again no news about the corporate tax cut coming. And if you go and check the chart of Sensex, you will find that Nifty, although it protected this bottom here, but Sensex had made a new low, so technically it was still very much bearish in this structure. And next day what happens is market opens flattish, and then the finance minister comes and she announces this corporate tax cut, and then there's a huge rally. Now ये मैं ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि whenever you have such a reversal, ठीक है, और such a move, ऑलवेज नोट द बॉटम ऑफ दैट कैंडल, क्योंकि ये बॉटम जब अगली बार जब टूटेगा, ठीक है, तो मार्केट अपना बदला जो है पूरी तरीके से लेता है और फिर लोग जो है खून की उल्टियां करते हैं। अगर इस कैंडल का रिवर्सल हम देखें कि मार्केट ने अपना इस बदले को कैसे मार्केट ने लिया, तो यू कैन सी व्हेन द बॉटम ऑफ दिस कैंडल वाज ब्रोकन हियर, नेक्स्ट सेवरल डेज मार्केट हिट लोअर सर्किट। मार्केट ने पहली बार जो है बाजार में एक लोअर सर्किट हिट किया जैसे ही हमने इस कैंडल को ब्रेक किया। सो right now today we have to note the bottom of this candle, which is what, which is 17,784. Let's make it 17,800, and this also happens to be the previous swing high over here. So by default this market stands bullish as of now till we are not breaching the 17,800 level. Now what about on the higher side? On the higher side, where are the obvious resistances and where are the potential fatigue levels? So the obvious resistance stands at 18,100 level, right, जो कि आज का ऑलमोस्ट हाई है। बट हमें क्योंकि बाजार अभी नीचे से ऊपर की चाल में है, हमें बाजार की रिवर्सल का वेट करना है विदाउट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट, बिकॉज शॉर्ट तो हर बंदा कर रहा है ना, इसीलिए तो इन्होंने स्क्वीज करा है, करेक्ट। और मैंने आपको फ्राइडे को भी वार्न किया था कि शॉर्ट वॉट करने की झंझट में मत पड़ना जब तक कि कोई रिवर्सल ना हो। सो ओवर हियर शॉर्ट्स विल बी टेकन only once we see a bearish reversal candle like this with a breach of 17,800 level, or we go little higher, or we do some sort of failure like this, ठीक है, we do some reversal, some sort of failure, maybe we go above overboard this and come back again, make a bearish engulfing candle or something like that. So we need a reversal pattern without which we are not going to initiate any kind of short. The trend is still bullish. 17,800 is your power gap. 17,800 जब तक protected है, market has scope to move till 18,150 and 18,333. Now दो critical levels में आगे watch करूंगा, which is your 18,135 and 18,333. So if I see market taking resistance at 18,135, from an intraday perspective we will take a short trade. If we see a bearish reversal forming at 18,135, then we will try to
fade this market, okay, with a hope that we breach 17,800. इन आइदर ऑफ द केसेस अगर ये नहीं होता है तो मार्केट 18,333 जो है निश्चित तौर पे जाएगा, जहां पे बाजार एक प्रक्रिया ये कर सकता है कि जिस तरीके से हमने इस स्विंग हाई को यहाँ पे एक न्यू स्विंग हाई बना के तुरंत फेल कर दिया, वही बिहेवियर बाजार यहाँ पे एग्जिबिट कर सकता है, एंड मार्केट कैन वेरी इजीली मेक वन मोर न्यू स्विंग हाई just here, okay, which can be very much, closer to the previous highs, or maybe somewhere here, and then possibly you can see a short trade in this market. So overall ये जो बाजार है ना, फिर अगर यहाँ से ऐसे होता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मार्केट बन जाएगा, लेट मी टेल यू इन एडवांस, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज we will have completed a full-fledged new leg on the higher side with the ability to not sustain over there, और मार्केट का जो इंटरनल्स है ये एक एक्सपेंडिंग पैटर्न में है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि मार्केट अगर यहाँ से अगर न्यू हाई बना के या मे बी यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो इट कैन बी अ वेरी नेस्टी ड्रॉप इन द मार्केट, एंड आई बिलीव अभी बाजार जो है हमें 2-4 दिन जो है हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि our time cycle is coming, and if I put the time cycles, if I put the lines on my chart, you can see we are almost at the time cycle, ठीक है। so contextual चीज़ों को ध्यान में रखिए। अभी जो है कल के लेवल्स क्या हैं मैं उस पे आता हूँ, एंड we will then take the stock queries. So for tomorrow on Nifty, one level is very very clear. Okay, the mob level for tomorrow's session, we would like to keep the 18,030 level, हम इसे जो है एक मॉब लेवल कंसिडर करेंगे 18,030 के आसपास, 18,000 18,030. So I would like to keep this as a make or break level, and first target on the higher side will be to take out today's high. So it will be 18,135, एंड सेकेंड टारगेट मैं रखूंगा 18,220 को, ठीक है। दो टारगेट्स होंगे ऊपर में। ऑन द लोअर साइड, इफ वी आर ब्रेकिंग द मॉब लेवल, देन वी कैन स्लाइड वंस अगेन towards 17,900 level and towards 17,825, which obviously becomes a major support level for the same reasons that I have explained a little while back, ठीक है। सो 18,030 को वॉच करेंगे। कल हो सकता है मार्केट वापस से गैप अप करे, अगर कल मार्केट गैप अप करता है तो आई थिंक 18,220 विल बी डन, एंड देयर कैन बी सम फेडिंग फ्रॉम दैट लेवल। 18,250 के आसपास से एक मेन रिवर्जन जो है डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट देगा। इन दैट केस 18,030 ये आपका रीटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द व्यू फॉर टुमारोज सेशन। नाउ और गैप अप होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, वी हैव नॉट मेड एनी एक्सेस, तो गैप अप होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अगर लाइन चार्ट एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि वेयर आर वी ऑन द लाइन चार्ट परस्पेक्टिव। सो लाइन चार्ट में हम देख सकते हैं कि व्हाट शुड हैपन इज वी शुड टेस्ट दिस क्लोजिंग लेवल ऑन इंट्राडे बेसिस, ठीक है। तो ये लेवल आता है टू बी प्रिसाइज, यस, दिस इज 18,320। सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है ना दोस्तों इस क्लोजिंग लेवल को इंट्राडे में ये हिट करेगा, ठीक है। सो 18,320, इसीलिए मैंने ये लेवल एक रखा है 18,333 कि ये एक इंट्राडे में जो है ना मार्केट इसको हिट करेगा, और यहाँ से आप फेड कर सकते हो। ये तो फॉर श्योर फेड करना है 18,320 को, इसको आप फेड करना इंट्राडे में, आपको जो है अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, एंड देन लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज। सो Bank Nifty has again gone ballistic, and Bank Nifty has almost managed to reach 38,650 levels, and I think some more upside should come. 39,200 must be tested, which is where the next resistance comes. So 39,200 ये I think कल हो जाना चाहिए mostly, and this is where there is a major resistance. So 39,200 पे यहाँ से अगर weakness आता है तो आप इसे जो है थोड़ा short कर सकते हो, बट उसके पहले I think there is no shorting opportunity. You must wait for the best possible levels to be tested, and only then you should try to short. Till that is not happening, market को थोड़ा समय दो, market को cool off होने दो, and try to buy on dips. Now with today's rally, it will be very difficult to buy on dip unless you get some solid correction, unless you get some pullback. So एक reference level कल के लिए जो मुझे लगता है काफी यूजफुल हो सकता है,
बैंक निफ्टी पे, दैट लेवल इज 38,350. I think this is going to be a very important level for tomorrow's session. So the make or break level will be 38,350. First target on the higher side will be 38,880, and second target will be 39,200. I think there is a very great chance कि हम 39,200 कल hit करें. uh, Now suppose we go and hit 39,200 in the opening or in the initial drive, then I think there's a very good chance to fade this move. So if you are a good price action trader, then watch for fading opportunity, because from 39,200 you can fade, and you can get a mean reverting move till almost 38,500. So this can be a very good 700 points knockdown move. And then uh, if it comes at mob level 38,350, यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड देखना, बट ऑब्वियसली विद स्टॉप लॉस ऑफ 38,000, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये जो ऊपर से एक मूव आएगा इसे आप वापस से लॉन्ग कर सकते हो एटलीस्ट 38,880 के लिए. सो दिस कैन अगेन ट्रांसलेट इनटू 500 पॉइंट्स अप मूव. एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आप देखिए कि किस तरीके से प्राइस एक्शन है. अगर वापस बेरिश लग रहा है तो वापस इसे शॉर्ट करो, एंड प्रॉब्ली यू कैन एंड अप गेटिंग अनदर 500 पॉइंट्स. तो इस तरीके से अगर आप 500 पॉइंट्स के एक ट्रेड लेके चलोगे, कपल ऑफ ट्रेड्स इफ यू गेट, यू कैन मैनेज टू नॉक आउट एटलीस्ट 1,000 पॉइंट्स टुमारो. Suppose if there is a gap down opening, then it would try to go below mob level, and then once it comes above, तो फिर एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग करने का with whatever stop loss, or probably 38,000 is a stop loss, and for the same targets 38,800 and 39,200. So basically the good levels to initiate the trade tomorrow on Bank Nifty is, I think, near 39,200 for shorting and 38,300 for long side. So ये दो levels हैं जहां पे हमें अच्छी trades मिलेंगी. बीच में it's all 50-50. So that's all from my side on Nifty and Bank Nifty. दोस्तों चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड राइट नाउ वी कैन टेक सम स्टॉक क्वेरीज. All right. PEL. फर्स्ट क्वेरी इज पिरामल एंटरप्राइज PEL. सो देखिए PEL इस समय जो है रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे है. रेजिस्टेंस है इसका 2285 2290 के आसपास. So watch out for tomorrow. Okay, tomorrow we might see a gap up and a breakout. So if there is a gap up opening above say 2300, तो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है. There is an unfilled gap near 2400. So 2400 का आपका टारगेट हो जाएगा. ठीक है. सो ये अगर एक अच्छे एक्शन से ब्रेकआउट करता है तो 2400 जो है इस बाजार में बहुत ही निश्चित तौर पे जो है होना चाहिए. 2400 पे मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुकिंग इसमें करना चाहिए. अदानी पोर्ट के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो अदानी पोर्ट सबसे पहले मैं इसको लॉन्ग करा चुका हूँ जब मार्केट जो है 15,600 पे था, और अदानी पोर्ट पे पूरा हल्ला बोल इसमें लॉन्ग कराया है मैंने फॉर न्यू ऑल टाइम हाई. पहला एक छोटा टारगेट था 800 का, जो कि आज इंट्राडे ही हो गया, एंड इट हैज क्लोज्ड अबव 820. सो व्हाई वुड यू एग्जिट, देयर इज नो रेजिस्टेंस एक्सेट्रा. सो अडानी पोर्ट जो है दोस्तों पूरी तरीके से बुलिश है, और अदानी पोर्ट जो है 900 जाने के लिए तैयार है. अब जो है अदानी पोर्ट पे जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था of 780 and 770, this is now a buying zone. This is the resistance turning into supports. So this is your support zone, and next target हो जाएगा 880 से लेके 920. Adani Ports, we have maintained bullishness right from the day Mr. Adani was born. BHEL जो है जो अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनको एक एडवांटेज मिलने वाला है आने वाले 2-3 महीनों में. तो मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक को अभी रखिए, इसमें कोई मेजर डाउनसाइड नहीं है. 44 रुपए 45 रुपए कोई बड़ा एक रिस्क भी नहीं है. इस स्टॉक को अभी रखिए. ठीक है, टेक्निकल ट्रेड इसमें नहीं करेंगे, एक होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से इसे हम रख सकते हैं इस समय. और मैं समझता हूँ अगर इसको समय देंगे तो ये स्टॉक 72 रुपीज एक बार तो निश्चित तौर पे दिखा देगा. तो लेट अस वेट. सबसे पहली क्वेरी आनी चाहिए थी कि HDFC बैंक में क्या करना है.
ठीक है। तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों के चार्ट्स को हम रेफर करते हैं। सो HDFC बैंक में इफ यू रिमेंबर, तो मेरा एक ही व्यू था HDFC बैंक में कि ये स्टॉक में जो है आपको एज अ इन्वेस्टर आपको बाय करके रखना है। और 1840 का मैंने आपको टारगेट दिया था। 1840 जो है ये घूमते फिरते हो जाएगा, दैट इज वेयर यू शुड एग्जिट ऑल आउट। इसको बेच बाच के निकल जाना, क्योंकि लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये मर्जर जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, सारी बातें आज मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इस स्टॉक को 1840 1800 यहाँ पे आप देखना, स्टॉक से निकल जाना। एंड दैट्स इट, यही अपडेट है। सो मैंने इसमें 1400 से 1450 के रेंज में काफ़ी बार यहाँ पे लॉन्ग इसमें एडवाइस किया था फॉर द सेम टारगेट, राइट। एंड टुडे इट हैज़ ऑलमोस्ट हिट द प्रीवियस हाइज। So it might take time, it might just cool off, or it might tomorrow again it might do a big gap up and move till 1840, whatever it is, 1840 1800, ये भाई हमारा टेक्निकल रेजिस्टेंस है। हमारा काम है यहाँ पे निकल जाना, दैट्स इट। उससे ज़्यादा अगर हम सोचते बैठेंगे, अगर उससे ज़्यादा हम स्टोरीज बनाएंगे तो फिर फंस जाएंगे बुरी तरीके से। ठीक है। सो दैट इज़ द व्यू ऑन HDFC बैंक। HDFC लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो ये स्टॉक वैसे तो काफ़ी पथेटिक था एंड इट वाज इन अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड। बट आज के मूव ने जो इस स्टॉक्स के बैगेज होल्डर थे, यानी जिन्होंने पहले से इसे लॉन्ग करके रखा था एंड दे कुड नॉट एग्जिट, उनके लिए आज एक सुनहरा मौका था कि पुराने माल को एग्जिट करने के लिए। सो इफ यू हैव नॉट एग्जिटेड, देन ट्राई टू एग्जिट, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेरी है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज, लेट मी टेक प्राज इंडस्ट्रीज। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदाउट योर लाइक्स, विदाउट योर सपोर्ट, यूट्यूब पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वी डोंट टेक एनी मनी, देर इज नो व्हाट यू से कमर्शियल एस्पेक्ट हियर, इट्स ऑल फ्री। सो यूट्यूब इज नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम अवर चैनल एंड वी आर ईटिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूट्यूब। सो आपके लाइक शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। सी प्राज इंडस्ट्रीज राइट नाउ गोइंग गुड, and what should happen in this stock is it is laddering up right now. Take a chart of Cipla and you can see what happened with Cipla. So this reminds me of that. So it is laddering up, and after say couple of weeks, few weeks, it should move till 480। ठीक है। तो ये स्टॉक आपने जहां भी खरीदा है 480 का इसका टारगेट है, वेयर यू शुड एग्जिट wholeheartedly। and right now if you have bought at say lower levels of say 330 340, you can hold this stock with a stop loss of 327 if you are aspiring for 480 as a target। ठीक है। और जिस तरीके से मैंने चार्ट ड्रॉ किया, आप इसका फोटो ले सकते हो, यू कैन सेव दिस इमेज। यू कैन ऑल्सो बाय ऑन डिप somewhere near 370 360, you can buy here also fresh with a stop loss of 327 for the same target। so this is the view and analysis for Praj Industries। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है NMDC पे लॉन्ग ट्रेड है, NMDC लिमिटेड। सी NMDC ऑलरेडी लॉन्ग है, पहले भी बता चुका हूं मैं, 172 का गैप ये जो है फिल हो चुका है एंड इट विल गो बैलिस्टिक। NMDC जो है ये भागते रहेगा और NMDC 200 वगैरह जो है बहुत जल्दी टेस्ट करने वाला है। इस पे मैंने बहुत बार लॉन्ग ट्रेड आपको रेकमेंड किया था। HDFC लाइफ, नेक्स्ट क्वेरी अगेन coming from the house of HDFC, Mr. Parekh। So HDFC Life, I think, has a destiny at 635, which is where the Kabira of Mumbai Corporate Finance will come। So इसको वॉच करना। ठीक है, ये बहती गंगा में ये भी हाथ धो रहा है, तो 635 के आसपास जो है स्टॉक से निकल जाना। नेक्स्ट क्वेरी है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स इज द नेक्स्ट क्वेरी। सो बर्जर पेंट्स में क्या विचार है? बर्जर पेंट्स जो है आई थिंक इट हैज मेड अ मीडियम टर्म बॉटम हियर एट 635। नाउ राइट नाउ बर्जर पेंट्स में जो मोमेंटम है ये 740 तक चला जाएगा। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज होगा कि उसके बाद तो 740 फिलहाल आप लेके चलिए, एंड आफ्टर फ्यू डेज फ्यू वीक्स आई विल सजेस्ट a fresh trade in Berger Paints, which will be a very high quality trade. So for now, 740 and 750 is coming in this stock. ITC is the next query. ITC Limited, somebody is asking for tomorrow. I have only one view, 280 and 320. That's it.
and I'm saying about this view since it was at 210, 29, all these levels, it has already moved in huge profits. So ITC, we are one of the very early investors. Sorry, ITC, we are one of the uh, earliest people who told you what is going to happen. Next is Maruti. Maruti, I think कल explain कर चुका हूँ. It's the same thing. Naukri.com info edge. Naukri.com info edge is the next query. Let me see. Okay, so this stock is getting ready, uh, and I think it should hit 5100 for the time being. Okay, so it is getting ready, and 5100 is coming on this stock. We can see a breakout imminent on this stock, right? So this was the overthrow. This is the low volume secondary sell off, could not sustain. Again one retest. Okay, nice volume. So very nice, this is a nice activity, and 5100 is the target. So 5100 should be hit. That is where you can exit your trades if you have taken in at all these levels of 4300 etc. सो दैट्स इट दोस्तों. एक और बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है, प्राइस एक्शन टेक्निकल्स, माय टाइप ऑफ थिंकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, अप्रैल 16th एंड 17th को स्केड्यूल्ड है. आप जो है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के पश्चात आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा. चलो नेक्स्ट जो क्वेरी है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में लॉन्ग करना चाहते हो या डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में लॉन्ग है? See, Dixon Technology is again very similar to Naukri. So one spot should come till 4687 level. Delta Corp, Delta Corp, very very strong, high conviction. 4-5 बार ट्रेड्स बता चुका हूँ. डेल्टा कॉर्प में अब निकलने की तैयारी करो, या फिर एक सिंपल अप्रोच. व्हाट इज दैट सिंपल अप्रोच? 2 दिन के बॉटम पे ट्रेल करो. तो अब आज का कैंडल, कल का कैंडल ट्रेलिंग हो जाएगा. ये तो आप अपने मोबाइल में चेक कर लो. कीप ट्रेलिंग 2 days बॉटम, हर 2-2 दिन का बॉटम. ठीक है, इस तरीके से करंट कैंडल, पिछला कैंडल, 2 दिन के लोज को ट्रेल करते जाओ, जहां तक जाता है चलने दो. जब ट्रेलिंग हिट हो जाएगा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ट्रेल. ये भी मैं ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये वाला मेथड कब अडॉप्ट करना है. यू कैन क्लियरली सी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अप्रोच. ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है आईसीआईसीआई बैंक पे. सी आईसीआईसीआई बैंक, आई थिंक टुमारो इट शुड रैली इफ देयर इज नो बिग प्रॉब्लम. यस, आई थिंक कल कल रात को शायद मैंने बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक में जो है बाय करना है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कल रात को मैंने बहुत ही क्लियरली बोला कि आईसीआईसीआई बैंक को जो है आप इसे बाय कीजिए आज, राइट? और एक स्टॉप लॉस भी मैंने दिया था, आई थिंक 720 और समथिंग. आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट कल मैंने दिया था इसमें लॉन्ग ट्रेड, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड वेरी सून. फर्स्ट टारगेट 767 हो जाएगा, जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना. देयर इज अ अनफिल्ड गैप ओवर हियर which must be tested later on, which is at 785. So once we reach the 770 level, automatically ये जो 730 है ये हमारा एक फ्लोर बन जाएगा. So if any dip comes here, we will buy with that same stop loss for a target of 780. Yes, अब मुझे याद आ गया, मैंने क्लियरली कहा है कि 700 से 800 के बीच में निश्चित चलेगा. तो 700 के नजदीक आता है तो बाय करेंगे, और 800 के नजदीक आता है तो सेल कर देंगे. ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट. बीपीसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईजीएल. सो बीपीसीएल पहले लेते हैं. सी बीपीसीएल जो है पिछले 2 दिन से बैक टू बैक एक हाई वॉल्यूम रैली कर रहा है. बीपीसीएल 400 रुपया आने वाला है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा. 400 रुपये इज अ डन डील ऑन बीपीसीएल. उससे ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट यस 400 ये जो है हो जाएगा. ठीक है, 400. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे व्यू चाहिए. सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज अ परमा बेयर काउंटर, नंबर एक बात. ठीक है, जानते हो आप. सो इंडिया बुल्स में इस समय क्या होगा, 211 का लेवल जो है ना, ये एक और बार रीटेस्ट हो जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं. सो चलते फिरते घूमते टहलते जो है 211 एक बार हो जाएगा. दिस वाज द लास्ट सपोर्ट दैट
हैज ब्रोकन हियर, सो वी शुड टेस्ट। ठीक है, सो ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक घिसा पिटा स्टॉक है, जो कितना भी ऊपर चल जाए इसे गिरना ही है। और ये चीज़ मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से बोल रहा हूँ। सो आई रिमेंबर दिस स्टॉक यूज्ड टू ट्रेड एट 1200 लेवल्स, और वहां से ये स्टॉक आप देखिए कहाँ पे आ चुका है। सो दैट्स द अपडेट। 211-200 रुपए के आसपास जो है इसे आपको निकल जाना चाहिए। टाटा स्टील पे क्वेरी है। टाटा स्टील तो मैं कहाँ से बाय करा रहा हूँ, 1060 रुपए से बाय करा रहा हूँ। ठीक है, और टाटा स्टील कहाँ पे आ चुका है, जस्ट एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास जो है, इट इज स्ट्रगलिंग सिंस मेनी डेज। नाउ कीप एन आई हियर। नाउ हाउ टू डील विथ दिस सिचुएशन वेयर द स्टॉक हैज गिवन अ वेरी नाइस जंप, but there is a overhead resistance and it is consolidating also. Now एक बात का ध्यान देना कि ये स्टॉक जो है ना, थोड़ा ट्रिकी स्टॉक है। अगर ये स्टॉक निकल गया 1370 1380 के ऊपर, अगर ये निकल गया तो देर इज नो लुकिंग बैक एंड स्टॉक विल डायरेक्टली हिट 1480 लेवल्स। ठीक है, राइजिंग वेज अपसाइड ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही बिग ब्रेकआउट होता है। बट दिस राइजिंग वेज अगर फेल होता है तो ये एक बार रीटेस्ट करेगा 1249 पे। ठीक है, 1249 पे। सो कीप एन आई 1360 1370 1380, ये 20 रुपए में पूरा गेम है। ओके, सो सपोज अगर आप इसमें बुलिश हैं, अगर आपने बाई किया है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रेल टू 1300 लेवल, ओके, विच इज द recent price support, and hope for a breakout. If you get a breakout, then very nice, you know where it will go. If you don't get a breakout and if you break on the lower side, तो आप अपना एक बार लॉन्ग स्क्वाप एग्जिट करिए, let it come on the lower side near 1200 level, and again you can buy this stock over there. ठीक है, and in next round we can hope that certainly it will break this level. Okay, so that is how we can deal with this chart. Okay, let us take next query. Galaxy surfactant. Okay, दोस्तों इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, गैलेक्सी, ठीक है, ये स्टॉक जो है अभी ठीक है, एंड ट्राई टू होल्ड विथ 2600 एज अ स्टॉप लॉस, and since markets have crossed 18,000 level, then all these stocks they should start to break, because they have got that opportunity now. सो फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूंगा। इसमें 2600 का एक स्टॉप लॉस आप लेके चलिए, एंड इफ इट ब्रेक्स दिस 3300 लेवल, 33-3400 लेवल, देन यू रिमाइंड मी अगेन, हम इसे रीवैल्यूएट करेंगे। ओके, एंड वी विल सी एट दैट टाइम वेयर इट कैन गो। नेक्स्ट है सिप्ला। सिप्ला तो ऑलरेडी आई थिंक 15 दिन पहले, when it was trading somewhere here 920, that time itself I said Cipla is going to break out, and almost 1100 was the target. It went almost till 1080, right? So Cipla में अभी कोई ट्रेड नहीं है। why? Because Cipla जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, and let it come at some more lower levels, probably 980 or something, 990 or something. Over there we should buy. So we already have a very strong resistance, right? So these resistances will act as a support in the future. So right now stock is doing some time correction, so let it continue. This is 1, this is 2, let it come at 3, and this is where we can buy। 980 पे इसे buy करेंगे, 920 का stop loss होगा, और अगला टारगेट हम रखेंगे 1150 से लेके 1200 के स्लैब में। ठीक है, so that's the update on this stock Cipla। नेक्स्ट क्वेरी है भारती एयरटेल पे। भारती एयरटेल, सो भारती एयरटेल 750 का रेजिस्टेंस जब क्रॉस हुआ है, तो भारती एयरटेल जो है लगभग 800 के स्तर पे जाने के लिए तैयार बैठा है। सो इस समय आपको क्या करना है कि सपोज अगर आप लॉन्ग हैं तो नंबर 1, अच्छा एक और बात बता दूं कि डोंट गेट कैरीड अवे बाय टुडेज मूव। हाँ, ठीक है, मार्केट वेरी वेल 18,100 पे जो है कुछ फ्लिप फ्लॉप करके पता चला रिवर्सल कर दिया, मार्केट आ गया 17,500 पे। तो ऐसा ना हो कि आपके ट्रेड्स जो अच्छे प्रॉफिट में थे, आपने कोई ट्रेलिंग वगैरह नहीं लगाया, आपने बस छोड़ दिया उसे, एंड दे कम बैक अगेन एंड यू लूज ऑल द प्रॉफिट्स। तो ये गलती मत करना। ठीक है, सो अब जैसे एयरटेल है, एयरटेल पे सपोज आपने अगर अच्छी प्रॉफिट अभी मिल रही है आपको, सो एयरटेल हैज अ रूम टू गो टिल 800 लेवल।
एंड राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट एट 765. तो 35 रुपए के चक्कर में नीचे के 100 रुपए मत छोड़ना. ओके. सो एयरटेल पे इस समय जो है 740 इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 743 है. ओके. एंड 800 इज द टारगेट. 800 इट कैन हिट. Next query, let me take JSW. JSW Steel. JSW Steel तो almost previous double top के पास है, so it will give a breakout very soon. Don't worry. So JSW Steel has a very good support at 700 level, and I'm expecting this stock to give a breakout above 775 for a target of 820. नेक्स्ट जो क्वेरी है HUL. सी HUL बहुत बार बोल चुका हूँ कि 2000 पे था, तभी भी एक बार मैंने बताया था कि बिंदास बाय करो, 1800 का स्टॉप लॉस होगा, बट इट्स अ इन्वेस्टर स्टॉक. जैसे मैंने HDFC बैंक में क्या कहा था, रोज रोज की मत उसमें इंक्वायरी करो, कुछ नहीं होना है. बाय एंड होल्ड करो मेरे स्टॉप लॉस के साथ. 1840 का टारगेट आपको मिल जाएगा. ठीक है, मिल गया. उसी तरीके से HUL में बैठे रहो शांति से. 3200 का टारगेट भी आएगा, बट आपको बॉस वेट करना होगा, क्योंकि वो काउंटर नहीं है ट्रेडिंग वाला. दैट इज अ काउंटर फॉर लाइक इन्वेस्टर. ठीक है, 3200 HUL में आएगा, बस 100% आएगा. डोंट वरी. PNB इन्फ्लेशनरी साइकिल में जो है FMCG की एसेट वैल्यूएशन बढ़ती है, तो अभी आप रुको तो सही, सेक्टर रोटेशन होने तो दो. ITC क्यों भाग रहा है? ITC ने अचानक से ऐसा क्या, सब लोग सिगरेट पीने लगे? नहीं. सब लोग होटल्स में जा रहे? नहीं. ITC क्यों भाग रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्योंकि राइजिंग इन्फ्लेशनरी साइकिल में क्या होता है कि एसेट की वैल्यूज बढ़ती है. आज सारी चीजें महंगी हो गई हैं. टू क्रिएट अ न्यू एसेट यू नीड टू गिव 30-40% मोर वैल्यू. नाउ कंपेयर करो कि जो ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी ह्यूज एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, उनकी तो ऑटोमेटिकली 30-40% वैल्यू बढ़ गई. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज व्हाई दिस FMCG कंपनीज दे हैव ह्यूज एसेट बैंक. इनके पास काफी एसेट्स होता है, तो इसीलिए इनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट बढ़नी ही बढ़नी है. इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. अभी बैंकिंग का एक बार ये चक्कर खत्म हो जाएगा, तो फिर अगले 2-3 महीने के साइकिल में जो है FMCG भागेगा. इसीलिए कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि FMCG सेक्टर जो है ये जून क्वार्टर के बाद FMCG सेक्टर देखना. ओके, कुछ और क्वेरीज लेते हैं. पीएनबी आप जो है होल्ड करिए. पीएनबी 44 रुपए पे एक और बार आएगा. नेक्स्ट क्वेरी है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. BDL दोस्तों, वी आर अप्रोचिंग द 1 आवर टाइम लिमिट, सो आई विल हैव टू वाइंड अप. BDL तो देखो ऑलरेडी एक न्यू हाई बना चुका है दोस्त. सो BDL में एक बार आप एग्जिट करिए. अगर 626 का लेवल दिखता है तब तो निश्चित तौर पे एक बार एग्जिट करिए. प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है. सेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम has given a breakout. All the best to सेल, क्योंकि सेल में मैं पिछले कई महीनों से जो है ना बेरिश था. आफ्टर दिस मेल्टअप रैली, यहाँ से जो ये गैप जो था, ठीक है, एग्जॉशन गैप था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ बस. तो हम यहाँ से जो है सेल में बेरिश हो गए थे. एंड सिंस यू कैन सी कितने एक अरसे से इसमें हम बेरिश मेंटेन थे, राइट. सो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसने एक थोड़ी ब्रेकआउट करने की कोशिश की है शॉर्ट टर्म में. सो सेल राइट नाउ देखते हैं कहाँ तक जाता है. एंड आई होप कि सेल ऊपर जाए. सो सेल जो है 125 तक की टारगेट है. इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ सेल में, क्योंकि 125 इटसेल्फ एक मेजर मेजर बैरियर है इस स्टॉक के लिए. सो राइट नाउ इट इज़ एट 106. मे बी बहुत बुलिशनेस कुछ रहा तो 125 जो है ना ये हिट कर जाएगा. बस उससे ज़्यादा तो अभी मैं इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहता. TV18 broadcast. TV18 broadcast. Okay, so stock is already at a new high. So two things you can do. Number one, trail. अगर ट्रेल करना है तो 62 रुपीज पे या फिर एक 82 रुपीज पे प्रॉफिट बुकिंग इस समय आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेरी है गुजरात गैस. गुजरात गैस लिमिटेड, दिस स्टॉक इज स्टार्टिंग टू टेक ऑफ. हालांकि काउंटर डेड है, तो अगर आपने इसे बाई किया है तो ठीक है. स्टॉप लॉस यहाँ पे 470 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. एंड इन बेस्ट केस सिनेरियो 590 जो है एक बार आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. TV18 सेल हो चुका है. SPARC. नेक्स्ट क्वेरी है SPARC सन फार्मा. तो सन फार्मा जो है दोस्त इस समय
ब्रेकआउट अगर देता है 310 के ऊपर, 305 के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात होगी। बट राइट नाउ कोई ग्रेट ऐसा इसमें मुझे चार्ट स्ट्रक्चर अभी दिख नहीं रहा है। ओके, सो आई डोंट नो आपने कहाँ बाइंग वगैरह क्या की है। ओवरऑल आई कैन ओनली सजेस्ट कि आप इसे ट्रेल करो 265 के स्टॉप लॉस से, एंड अगर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर ये 360 360 दिखा देता है तो इसे एग्जिट कर देना, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेयर द नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस कम्स। ठीक है, सो आइदर योर स्टॉप लॉस विल हिट फर्स्ट और योर टारगेट विल कम, इन आइदर ऑफ द केसेस यू विल बी ऑटोमेटिकली फोर्स्ड टू एग्जिट। दैट्स इट। एक आखिरी क्वेरी में लेता हूं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो LNT। नाउ LNT, ओके, LNT पे भी कुछ न्यूज आना चाहिए। So LNT right now is ready to rumble, and LNT I think can very easily shoot towards 1920 level. So LNT में बने रहो 1734 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 1920 का जो लेवल है ना, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। राइट, सो LNT if we look at the weekly chart, this is the weekly chart, and we are breaking the 3-week consolidation right now. So this is a very nice, ओके, फ्लैग एंड फ्लैग ब्रेकआउट है। तो LNT जो है आप बाय भी कर सकते हैं। LNT में कोई भी गिरावट आती है आप बाय कर सकते हो। ओके, बट आपको 1715 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1715 शुड बी और स्टॉप लॉस। आप इसे बाय भी कर सकते हो 1780 1790 के रेंज में, एंड द टारगेट, द फर्स्ट टारगेट आई थिंक शुड बी वेरी इजीली टुवर्ड्स 1920। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लेके चलेंगे। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन सम करेक्शन 1780 1715 स्टॉप लॉस, टारगेट 1920। दैट्स इट। ओके, एक आखिरी क्वेरी लेते हैं एंड देन आज के लिए सेशन समाप्त करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, let us take this stock. So stock is at resistance of 390. ओके, कल वॉच करना, अगर ये स्टॉक गैप अप करता है तो उस गैप के स्टॉप लॉस से इसे आप ट्रेल करना। स्टॉक हो सकता है एक बार 427 करे। ठीक है, सो स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस। बट व्हेन ऑलमोस्ट ऑल दी स्टॉक्स दे आर गिविंग अ ब्रेकआउट, तो समथिंग फिशी हो जाता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक जो है ना 410 वगैरह पे थोड़ा सा flop karega. It will spike up, give a breakout, convince all the retail people to enter longs, and then it will cry over here and it will drop till 367, probably after which the real rally will come. इस तरीके से मुझे लगता है। तो 410 पे वॉच करना, ठीक है, तो आप या तो ट्रेल करना या तो 410 पे आप बुकिंग भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, HDFC Life, I already covered this stock. HDFC Life I have already covered in the earlier part of the session. So HDFC Life right now should do 635, 635। ठीक है, एक आखिरी क्वेरी में ले लेता हूँ गेल and GAIL India. Let us check this stock. So GAIL India is ready for 170, 170 पे जो है GAIL India का मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक को रखो आप। ओके, इसको 140 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को आप रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गेल इंडिया जो है ये 170 पे नहीं रुकेगा, ये स्टॉक जाएगा 205 पे। जब 205 जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मैंने ये कहा था। फिलहाल अगर आपने इसको थोड़ा नीचे बाइंग किया, इफ यू हैव दैट कुशन, इफ यू हैव दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं समझता हूँ स्टॉक को रखना चाहिए। इस स्टॉक में फ्रेश ट्रेड भी हम ले सकते हैं। अगर कोई भी गिरावट आती है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए 136 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 200 रुपया। ठीक है, दैट्स इट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, देखो सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज अब कोई फ्रेश क्वेरी नहीं लेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा एक टाइट कंसोलिडेशन में भी है, एक वेज भी है, सो इसमें एक ब्रेकआउट होना बहुत ही इमिनेंट है, एंड विथ मार्केट सस्टेनिंग अबव 18,000 इट विल मेक द जॉब ऑफ ब्रेकआउट वेरी इजी। सो आई थिंक स्टॉक डिजर्व तो करता है, बट वी नीड अ ट्रिगर। सो अबाउट 2120 2150 वी विल गेट दिस ब्रेकआउट। ठीक है, सो इफ यू हैव बॉट दिस स्टॉक, तो मैं समझता हूँ इसे रखो। ये जो बॉटम था लास्ट ईयर का, इसे स्टॉप लॉस के तौर पे लेके चलेंगे। 1950 समथिंग आता है, आप भी चेक कर लेना क्या लेवल है ये, एंड लेट्स होप फॉर अ ब्रेकआउट। आई थिंक ये डिजर्व करता है, ये एक ब्रेकआउट इस समय डिजर्व करता है। ठीक है,
So that's all. So guys, that's all for tomorrow's session. We have completed the 1 hour live stream, and today I think I have taken at least 25 to 30 queries. तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड you can join the Instagram and the Facebook group also. And lastly, if you are interested to join the next upcoming training and be a part of our student Telegram group, you can WhatsApp and you can join. Thank you so much. Take care. Wish you all the best. Good night. Jai Mata Di.